Good evening, everyone. Am I audible? You can react to the thumbs up if I. All right. How are you all doing? Did you guys complete the week three learning material? What are you completing that? I was asking you if you have started completing the week three learning material. Did you like explore ANN as part of it? Okay, okay. So the reason why I asked if you have explored neural networks, artificial neural networks, as a part of week three, is because neural networks are like the second step towards it. So today we'll see what convolutional neural networks are and how we can use them to classify images. Yeah, yeah, Sudhindra, I know that. So yeah, FN. I saw that in the project it's written we have to create an ANN. So is Yeah. that like a typo or okay, we have to create that. Okay. See, ANN is artificial, which I'll tell what it is. Let me start first, okay? Okay. Yeah, okay. So let us begin. Before I begin, those who have started it, I would like to know what did you find out about neural networks? What do you know about it? You can write in the chat section or you can just unmute yourself. Those who have completed it. Uh, Let me tell that, no worries. So, convolutional neural networks, as the name suggests, are neural networks. These are part of deep learning. In the first session, I had shown you guys a set of the things involved in machine learning, if you guys remember that. In that, we had seen that deep learning is a subset of machine learning. So, what do we do in neural networks? We try to imitate how the human brain works. Just say you have neurons in your brain, right? They process information. Similarly, in computers, we use them to create neurons which can perceive information and data just like us. So this is basically an imitation of the human brain. Now coming to convolutional neural networks, these are used to classify images. Suppose you have an image of a cat and another image of a dog, and you need to build a machine learning model in which you have to tell which one is cat and which one is dog. You will use convolutional neural networks. We'll see how are they better than artificial neural networks and how we can use them. So let's begin. So right, artificial neural network is type of artificial intelligence that helps computers to see. We are not actually enabling computers to see. They are able to understand images from the data stored in the image, okay? Just like our brain does. So we try to look for patterns, shapes, and objects by breaking them down into smaller parts, and we try to analyze them layer by layer. They say you have an image, it is usually in RGB. Am I am I audible clearly, Abhi? You can just Yes. no. Okay. Okay. So you have images, right? They are stored in what? RGB format. You guys know what is RGB format? Red, green, blue. You have channels from 0 to 255, right? Similarly, we try to analyze those layers and we can see how to recognize faces, identify objects. So, CNN is used for classification. There are deep learning models that analyze images and we can categorize them, and it is a part of deep learning. So, CNN use multiple layers, convolutional, pooling, fully connected. We'll see what these are. So, in convolutional neural networks, there are basically terms that you need to know, and with an example, I'll tell what these terms are. So today we'll first see what is the architecture of convolutional neural networks. So you give an input image, okay? You have this image right here. You apply some technique. You'll see what this is. You
try to extract features out of it. Just say you have that cat and dog wala example. How would you identify if, or how would you differentiate between a cat and a dog? If anybody could just tell me. By the like shape of their faces and facial features. Yeah, exactly. Same thing we are going to do here. We are going to identify differences between them and try to classify them. So we extract features. You would see that there are multiple layers. We'll see why there are multiple layers. Then we apply a technique called as pooling. And in this also we try to extract some features. Then after extracting the features, we pass them through fully connected layers. So what are fully connected layers? We'll see that. And then you have the output, whether it's a cat, whether it's a dog, or any other example you would like to take. So I prepared something. We'll take the example of a panda. Okay. So I have this image right here of a panda. This is in RGB format. Images are stored in red, green, and blue. इस order में images are stored, and these channels lie from 0 to 254. Yeah. And similar to RGB, we also have BGR, which is blue, green, and red. The difference between them is how the images are stored. So, just like SM mentioned, if you have to identify a cat or a dog, what would you see? The shape of their eyes, shape of their nose. Similarly, what would the convolutional neural network do is it would take this image as an input, then then I'll apply some filters over it. These filters are basically, जैसे first वाला filter is to identify panda's eyes. Next filter is to apply to identify the nose. Then comes ears. Then comes hands. Then come feet. So these filters are called as kernels. Okay, these filters are called as kernels. Please remember this. Kernel is a very important word in convolutional neural network. Either you call them filter, either you call them kernels. So first of all, in this image, first we'll try to identify panda's eyes. Does this look like panda's eyes? Yes. Then it will be passed on to the next layer. Then we have panda's nose. Yes, it is panda's nose. Next stage where it will be forwarded. Then you identify those ears. So, in short, all these three features make up panda's head. The color of the fur is also there, but we are trying to simplify it here to understand how it works. Then in parts only this happens. So पहले आपने head identify कर लिया. Then what do you identify? Then you would identify the remaining lower body, right? So there are pandas hands and those are pandas feet. So you combine these two, you get panda's body. Now in the image, the neural network will check, does this look like panda's head? Yes, it does. Does this look like panda's body? Yes, it does. So, what would the neural network do? Combine both of this and then it will ask, is it panda? Yes, because all these steps said yes. So, this is a panda. Okay. So, this is how it actually works. Yes, SN. What would happen if like one of the kernel failed and the other one like passed through? Like for example, if the nose was different, would the end answer become no? Yeah, that's a good question. See, you have multiple features, right? Yes, Then what do you do is you take the majority vote, because what technique is this? This is classification. In yes, classification, your value comes between 0 and 1, right? yes, If it is above 0.5, usually you take it as a yes. Otherwise, yes. no. Okay. So मान लो यहाँ पे panda was looking the other way and we couldn't identify its eyes. Still, it would classify it as based on the majority score as panda. Okay, Aditya got is asking, yeah, like matrix value comparison. Yeah, Aditya, I think you're talking about matrices, right? Square वाले जो होते हैं. Yes, we compare them and then with each cell, right? You're right. Now coming to how.
what is the mathematics behind it? It's a little bit complicated, but I have tried to simplify it. So what are we going to do? मैंने क्या करा है? I have broken down my image. I have taken only this part, okay, and I have converted it into a 4 cross 4 matrix. So what I would do is I would apply a filter over it. अब देखो, in reality, in neural networks, these matrices contain the value between 0 and 255 because I said they are stored in what? RGB channels, right? But for simplification, I have taken -1 and 1. जहाँ पे eyes, what we are going to do is we are going to identify the eyes of panda, okay? So जहाँ पे eyes exist नहीं करती हैं, there I have taken as -1, and these two cells right here, यहाँ पे are 1, means यहाँ पे eyes हैं. So this is my image, ये वाली, बस यहाँ पांडा नहीं दिख रहा है, ओके. इसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है. आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद माई फिल्टर. नाउ व्हाट इज माई फिल्टर? आईज वाला फिल्टर. You would ask yourself, or you would have this doubt कि ठीक है, filter is 3 cross 3. Why is it 3 cross 3? Why not just 2 cross 1? क्योंकि eyes तो यहाँ पे है. See, what we are trying to do is we are trying to take the majority of the image. So what you do is you don't just see for the eyes, you also look for the surroundings. हो सकता है ठीक है यहाँ पे दो eyes हैं, but you have to look other at the surroundings as well, okay. That's why this matrix is 2 cross 2. You can also take 4 cross 4 matrix, but it wouldn't make sense because फिर पूरी image में ही filter लग रहा है. The accuracy or the complexity of a model would reduce and you might not get correct results. So यहाँ पे we will apply kernel. So kernel कैसे apply होगा, that I will show. So देखो, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा. दिस इज नॉट ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दैट यू गाइस स्टडीड इन 12th और योर फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक. दिस इज नॉट ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज. ठीक है, जैसे वो m क्रॉस n और p q r चेक करते हैं. इट इज नॉट दैट. डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. So what would happen is first kernel would be applied over this place. You guys can see the red box, right? Yes. Yeah. ओके. सो पहले यहाँ पे कर्नल अप्लाई होगा, देन इट वुड मूव हियर, देन इट वुड मूव हियर, देन इट वुड मूव हियर. अब पूरी इमेज पे इट इज मूविंग. ठीक है, we will multiply it and we would get some values. Now what this value would be, this, you will get this matrix. 4 बार अप्लाई हुआ है, ओके. ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है. -1 into 1 plus this would become 1 plus 1 plus 1. You can try that. Abhi I'm not trying that, okay. I have already written the values. So what I did, I applied my kernel and I got some matrix. What I did here is I extracted some important features. What is the feature that we are trying to get is the eyes of the panda, right? Some of you have joined right now. I'll explain it once again. So we are studying convolutional neural networks. 2 by 2, Aditya, what are you trying to say? I think you're confused why we are getting this, right? 0344. The reason why, yeah, the reason why we are getting this is not your traditional multiplication. इसमें देखो, ये फर्स्ट कर्नल पे 3 क्रॉस 3 और मल्टीप्लाइंग विद 3 क्रॉस 3. यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग लाइक यू डू इन मैट्रिक्स. ये नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट होता है आपका. इट इज दैट. आई होप आई एम क्लियर नाउ. या, ओके. फॉर दोज ऑफ यू हैव joined recently, we are studying convolutional neural networks. These neural networks are a part of deep learning. What we try to do is we try to imitate how neurons in our brain work. So that's why they are called as neural networks. So we are currently seeing an example of a panda, image of a panda, and in this image we are trying to detect if panda is there or not.
We have divided our task into these many tasks. First, we will identify panda's eyes, then nose, then ears. Okay. So, pehle we are at eyes. So we have converted this image of the panda into a matrix, 4 cross 4 matrix, and we have assigned some values. These values अभी for simplification are arbitrary. Arbitrary in the sense जहाँ पे eyes हैं वहाँ पे I have taken 1, जहाँ पे नहीं है I have taken -1, and we are applying a kernel. Yeah, ऐसे. लाइक अगर हम रियल एग्जांपल लेते हैं इसमें 1 से 256 तक होते हैं, तो जहाँ पे लाइक आइस नहीं है तो क्या वो नंबर लाइक 256 की तरफ क्लोज होता है, एंड जहाँ पे आइस है वो 1 की तरफ क्लोज होता है, लाइक वो ऐसा वर्क करता है। देखो, अगर वैल्यू वहाँ पे वो फिल्टर मतलब जहाँ पे फिल्टर वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यू यूजुअली गेट वैल्यूज इन नेगेटिव लेस देन जीरो. So we have applied this kernel. Kernel is a filter. Look, I am looking for ice. That's why it is 1. Rest all values are -1. So kernel is synonymous to filter. How this kernel is applied? You slide your kernel over the actual image. So it slides like this. After multiplying, which is dot product, you get this matrix. Okay, this is the first step. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? If you don't have any doubts, you can show a thumbs up. Okay. Next up, we use something called as ReLU, which is activation function. Before that, look at this matrix. यहाँ पर all the values are positive, right? We are not getting any negative value. So this means that in this frame, in this part of the image, eyes do exist. Okay. अगर -1 से less value आती ना, not -1, sorry, 0 से less value आती, you would take the maximum or you would check the maximum place where you're getting a value greater than 0. ठीक है. Abhi, next step is applying activation function. Now, what is activation function? There are many activation function, but the best one that we use is ReLU, which is rectified linear unit. It is defined as f of x equals to maximum of 0, comma x. This means that all negative values are replaced with zeros, while positive values remain unchanged. Why we are doing this? Why are we doing this? Is because टू देखो जहाँ पे हमारे माइनस नेगेटिव में वैल्यू आ रहे हैं, दिस मीन्स दैट द फीचर डजेंट एग्जिस्ट जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, राइट? जैसे आईज होती -1 में आता, तो मैं ये समझ लेती कि उन जगह पर उन दोज पार्ट्स ऑफ द इमेज आईज डोंट एग्जिस्ट. सो उसको आगे लेके जाने का न्यूरल नेटवर्क में इज देयर एनी यूज? नो, कोई यूज नहीं है उसका. यूज क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में इंपॉर्टेंट फीचर्स ही एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. हम सारे फीचर्स को नहीं कंसिडर कर रहे होते हैं. हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मिल गए, वी आर टेकिंग दैट. इससे टू थिंग्स हैपन. फर्स्ट इज योर मॉडल बिकम्स लेस कॉम्प्लेक्स. सेकेंड, if your model becomes less complex, that means your computation cost will reduce. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में अगर मैं सेम चीज करने जाऊं, सेम पांडा आइडेंटिफाई करने वाला, आई कैन टेल यू दैट देयर वुड बी मिलियंस ऑफ कंप्यूटेशन स्टेप्स, मिलियंस में आएंगे ये. बट आई डोंट वांट दैट. इससे क्यों? क्योंकि इससे कंप्यूटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा. आई हैव गॉट अ बेटर technique, that is convolutional neural network, so I'm using that. I hope I'm clear up till now. All right. So now I will apply ReLU, but यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई negative value नहीं है जिसे मुझे drop करना है. So all set, I can move forward. So if activation function is too weak, the model won't detect ears, tails or fur. इसीलिए I'm taking only the positive values. I'm dropping the negative values. ठीक है? ReLU allows important details to pass through while ignoring the useless negative values. This makes the network means neural network, more efficient and accurate. ठीक है? Now next step is max pooling. अभी let's go back to this slide. यहाँ पे convolutional हो गया. I have applied ReLU.
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes, SN, you have a doubt? आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. ये जो स्टेप था जो हमने पांडा की आईज आइडेंटिफाई करने वाला करा है, इट इज वी आर डूइंग इट वन टाइम. बट ये न्यूरल नेटवर्क है, हमें 3-4 बार करना पड़ता है ये. आप जितनी लेयर्स चाहो उतनी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस स्टेप वंस, आई एम गोइंग टू डू इट मल्टीपल टाइम्स ऑन मल्टीपल इमेजेस. क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग अ मॉडल. मशीन लर्निंग डजंट वर्क लाइक वी ह्यूमंस डू, राइट? एक बार देखी, वी गॉट इट. नहीं, मशीन को वी हैव टू ट्रेन ऑन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ऑफ द पांडा. ठीक है, तो हम ये मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करेंगे टेक्निक. यस, टू रिफाइन और ट्यून आर मॉडल. यस, यू गाइस आर करेक्ट. पर क्या है, वो सब अच्छी बात है. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप जो मैंने अभी पांडा की आईज करने वाला किया, दैट विल बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. सो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं. नेक्स्ट स्टेप इज पूलिंग. अब पूलिंग इज व्हाट? पूलिंग का क्या मतलब होता है? लिटरल मीनिंग कोई बता सकता है पूलिंग का? टू कलेक्ट मल्टीपल थिंग्स. Yes, we collect multiple things. What are we collecting? What are these things? These are features. What are we going to do? Pooling mein there are many techniques. Average pooling, max pooling. Max pooling is commonly used. So max pooling is down sampling technique that reduces the size of the feature map. अब देखो, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमें मिली थी, we call this as feature map. क्योंकि हमने फीचर एक्सट्रैक्ट करे हैं, दैट्स वाई फीचर मैप. मैक्स पोलिंग में आई एम गोइंग टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू जो इस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है. द मैक्सिमम वैल्यू दैट एग्जिस्ट हियर इज 4, तो आई एम गोइंग टू टेक 4. यहाँ अभी तक कर्नल, फीचर मैप और एक्टिवेशन फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? पक्का? ओके, गुड. ठीक है, तो अभी तक हमने कर्नल देख लिया, रेल्यू देख लिया, फीचर मैप देख लिया. अब ये देखो, हाउ कर्नल इज मूविंग वन स्टेप एट अ टाइम, है ना? वन स्टेप एट अ टाइम. अब दिस वन स्टेप इज कॉल्ड एज स्ट्राइड. ठीक है, अगर ये 2 स्टेप्स होते, मीन्स अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट आई एम मूविंग हियर, राइट, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स टू दिस. Just imagine if you had a feature, a filter of 2 cross 2. पहले आप यहाँ पे थे, नेक्स्ट यू जम्प्ड, यू केम हियर. आपने ये वाली चीज को लिया ही नहीं, दैट मीन्स यू यूज स्ट्राइड 2. स्ट्राइड इज बेसिकली द नंबर ऑफ स्टेप्स योर कर्नल इज मूविंग. आई होप आई एम क्लियर. ऑल राइट, ठीक है. सो फीचर मैप पे जब मैंने फिल्टर लगाया मैक्स पोलिंग की, द मैक्स पोलिंग गिव अस रिजल्ट 4. यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ी लीनियर हो गई है, प्लीज इग्नोर दैट. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज the final feature map is converted into a 1D vector preparing data for classification. Let me come back to the first slide. Pooling हो गई यहाँ पे. ठीक है, हमने इनपुट ले लिया कॉन्वोल्यूशनल कर
दिया, लेयर्स पे पूलिंग कर दी। नेक्स्ट स्टेप इस इमेज में नहीं शो करा है, बट जो भी मुझे फीचर्स मिले उनकी मैं एक 1D एरे या 1D मैट्रिक्स बनाती हूँ। अब उस 1D मैट्रिक्स को आई विल पास देम टू आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड, yeah, so you convert them into a 1D matrix and then you pass them to your neurons. अब neurons वो features को study करेंगे, उसमें patterns और features find out करेंगे, then they would give you a model and then you will have your output. तो next step is called as flattening. Why flattening? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स मिली है विच इज 2x2, आपने पूलिंग अप्लाई करी, यू गॉट 4। अब आपने 4 स्टोर कर लिया, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत बार होगा तो यू विल गेट मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यहाँ पे इट इज सिंपल, यू आर गेटिंग एक ही 1D एरे यू आर गेटिंग, बट ऐसा डजेंट हैपन इन रियल सिनेरियोज। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे ये वाली थी, ये 1D में कन्वर्ट हो गई है, जस्ट कंसिडर दिस फॉर द टाइम बीइंग एज एन एग्जांपल। ये ही कन्वर्ट हो जाएगी 1D में। देन these features, these numbers will be passed to the neurons. Okay. Next, you use fully connected layer. Now, this fully connected layer is your basic artificial neural network. You can say that convolutional neural networks are built on top of the artificial neural network. ये fully connected layer is similar to your artificial neural network. The flattened vector is passed through a fully connected neural network, like जैसे deep learning models में होता है. Then this network assigns probability. अब ये जो probability निकालने वाली चीज है, this comes from some more functions. Those functions are like sigmoid or softmax. Sigmoid, do you guys know what sigmoid is? If some anybody has Yeah, studied, like it can produce output in range of 0 to 1. yeah, it is also used in logistic regression, right? If Yeah. you guys know, yeah, great. That sigmoid function only we are going to use. Yes, absolutely, Mukul. You are right. We are going to use that. आप कोई और भी use कर सकते हो. There is softmax, and then you assign categories to it. 90% it is panda according to the model. 10% of it is trees. ठीक है. So model is 90% sure and it is a classification tool. So yes, ये panda है. The final layer uses softmax for multi-class classification. Multi-class classification means you have many classes. इमेज में पांडा भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ट्री भी आइडेंटिफाई करना है। मान लो देर इज वन मोर एनिमल, अ कोआला, यू आर आइडेंटिफाइंग 3 थिंग्स. So the final layer uses softmax for multi-class classification. E raised to power x. Aditya, what's your doubt? No, like he messaged like 1 by 1 plus e to the power minus x. So I was Yeah, rechecking. it's x, not minus x. Then sigmoid for binary classification to produce the predicted class. Okay, binary classification is yes or no type of problems or cat or dog type of problems. Understood? Okay. ठीक है, अब हमने यहाँ तक बेसिक समझ लिया कि हमारे न्यूरल नेटवर्क्स, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आई एम गोइंग टू रीआइटरेट देम, ठीक है, स्टार्टिंग से। अगर आपने मिस करा हो या आपको कोई डाउट हो, यू कैन जस्ट स्टॉप मी, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। The first term that you guys need to know is convolutional. Convolution. It extracts important features by merging information from different parts of an image or signal. If you check the literal meaning of convolution, the mathematical meaning, it means combining 2 or 3 functions to get the maximum feature. Okay, same happens here. Next is kernel. Kernel is a small matrix 3x3 or 5x5 used in convolution operation to detect specific features. जो eyes वाला example था या जो nose वाला example था, वो आप important features उसमें से detect कर रहे हो, वो apply करने के बाद जो आपको matrix मिलती है, that is your feature map. ठीक है. The output after applying filter to an image, it represents the detected patterns. Then comes activation function. It introduces non-linearity into the model.
by replacing negative values with 0. Then is your pooling layer. It reduces the spatial dimension of feature map while retaining important features. यहाँ तक समझ में आया? Yes, Sanya. Pooling layer. Yeah, pooling का literal meaning is collecting something, right? So what do you do is you collect the important features. हमने value apply करा, negative values को भी discarded. After that we did max pooling. ये जो हमें feature map मिला था, इसमें हम maximum value जो आई है वो retain कर लेंगे next layer को देने के लिए. Understood? Can you explain kernel again? Just a second. Sanya, are you clear? Yeah, I'm clear. Okay. Kernel is देखो बताते हैं. This is panda. ठीक है. Panda में we are trying to identify a panda. अब how do you actually human way में how do you identify a panda? You see that it has black and white fur. You see that इसकी eyes का ये shape है, ears का ये shape है, right? So what did you do? You identified some features. अब कंप्यूटर को ये चीज नहीं पता है, so we teach it. How do we teach it? We teach it by training, by giving it examples of features. तो जो feature मैं अप्लाई कर रही हूँ इमेज पे चेक करने के लिए, that is kernel. Understood? Okay. Next step is flattening. You convert your 2D feature map into a 1D vector before passing it to fully connected layers. Fully connected layers are similar to artificial neural networks. ठीक है? A traditional neural network layer that processes extracted features to make final prediction. अब इस final prediction के बाद you check it using sigmoid. जैसे पांडा है या नहीं उसके लिए यू वुड यूज 0 to 1 वाला sigmoid. If it is closer to 1 means panda is there in the image. If it is closer or less than 0.5 means panda is not there in the image. So these were the terms that you need to know. ये important terms हैं convolutional neural network की that you need to know. अब देखो यहाँ पर we did with panda's eyes. Similarly, you would do with panda's nose, panda's ears. You can identify some filters or kernels जो फीचर आपको फाइंड करने हैं यूज करने हैं. आई हैव कंडेंस देम टू दिस. एक्चुअल में तो बहुत सारे फीचर्स इट आइडेंटिफाइज. ठीक है, तो ये ऐसे होता है. लेयर बाय लेयर इट चेक्स पांडा एग्जिस्ट करता है इमेज में या नहीं. यहाँ तक सबको समझ में आया? एनी डाउट्स एनीबॉडी? No doubt. Why take only 0344? Niharika, just a second. देखो ये हमारी इमेज है, इसको आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर simplification to just explain to you. जहाँ पे आईज एग्जिस्ट करती हैं दैट सेल इज 1, रेस्ट ऑल दी सेल्स आर -1. सो मेरा कर्नल मैंने बनाया है दैट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईज. तो यहाँ पे देखो 1 1 है पास में ही दोनों के. ठीक है, तो आईज एग्जिस्ट करती है नहीं. इसमें क्या करूंगी, ये जो इमेज की मैट्रिक्स है मेरे पास उस पर इस कर्नल से मल्टीप्लाई कर दूंगी. व्हेन आई मल्टीप्लाई ऐसे कर्नल मूव होगा. ठीक है, ऐसे कर्नल मूव होगा और जब कर्नल मूव होगा उसके बाद यू वुड गेट दिस मैट्रिक्स 0344. एंड दिस इज नॉट योर ट्रेडिशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डॉट प्रोडक्ट. तो 03344 आया है. अब ये एक लेयर के लिए है, बट बहुत सारी लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क में, तो ये रीआइटरेट होता रहता है प्रोसेस. तो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ ओनली वन लेयर. एम आई क्लियर निहारिका? ओके, ठीक है. So this was the theory, the mathematics. I try to simplify it. Relu, you guys can check online or I'll just show you just a second. Abhi we'll see the code also ki how do we code it out.
I hope the screen is visible. Okay. तो देखते हैं review क्या होता है activation function. ये देखो, it looks like this. इसमें you discard all the negative values and you take only the positive values. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं. सिग्मॉइड भी you can use, but ReLU is better than using tanh and sigmoid in your trying to जिसमें आप डिस्कार्ड करते हो लेस इंपॉर्टेंट फीचर्स को. तो sigmoid is this. We have leaky ReLU also, max out and ELU also. Most popular is ReLU. We use ReLU. ठीक है. So this was about it. Ab should I, why not leaky ReLU? You can use that, but ReLU is the simplest one, and I took this as an example. Should I move to the coding part, guys? If you are clear up till now. Okay. So I have already prepared the notebook. It took me like 2 hours to train this convolutional neural network. So I am not going to run everything. I am just going to explain the code. I hope that's okay. I'll provide the notebook to you. That's all right now. चलो ठीक है. So Google Colab, and first we will download all the important packages. We are using TensorFlow, NumPy and Matplotlib. NumPy and Matplotlib, you guys are aware about it, right? TensorFlow is another library by Google only, which is used for deep learning. It is an open source machine learning platform. You can do pip install TensorFlow in your local machine or in your collab also. Okay? So this is installing all your necessary libraries. After that, we will import TensorFlow as TF. Then from TensorFlow, we will import Keras. Keras is in TensorFlow only. It is also used for deep neural networks. Okay. Then from TensorFlow.keras, we are importing layers because we are going to introduce layers in the neural network. We are using NumPy also, Matplotlib. Then one important thing, the data set that I am going to use is again cat versus dog wala prediction. This data set is already there in TensorFlow datasets. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड इट, ये अपने में पहले से ही है. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. वी आर गोइंग टू यूज द datasets part as TFDS. ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ऑल राइट. Yes. Next up, we have this. We are going to load the dataset. The dataset, comma info. देखो dataset के साथ TensorFlow में syntax is a bit different. Info, देखो इसमें as supervised. You can use this for your unsupervised training task also, but अगर आप as supervised लिखते हो ना, it will import it as 2 folders. एक में cats की images होंगी, एक में dogs की images होंगी. तो it would give, let's say 0 2 cats and 1 2 dogs. तो आपके पास 2 classes हो गई, जिसके nearest value आएगी you will identify it as that with information true. तो यहाँ पे FDS में मैंने image जो है वो load कर ली है. ठीक है. Then we do train test split. Train test split is again, you have data set, you split it into 3 parts: training, testing and validation. I will tell what validation is. I will train test. Okay? We are going to take 18,000 images for training. Then for validation, I am going to skip those first 18,000 dono classes se. Then I am going to take next 2,000 images for validation. Validation is आपने ट्रेन कर लिया अपना मॉडल, टेस्ट कर लिया, ठीक है. जब आपने ट्रेन और टेस्ट करा तो एक सीक्वेंस में उसने डेटा लिया. अब ये सीक्वेंस मान लो मैंने चेंज कर दिया और मेरी एक्यूरेसी में डिफरेंस आ गया, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? जो हमारा मॉडल होना चाहिए वो जनरलाइज होना चाहिए कि किसी भी टाइप का डेटा है, किसी भी सीक्वेंस में डेटा है, इट इज सेम. तो वैलिडेशन टेक्निक्स होती हैं. देयर इज क्रॉस वैलिडेशन. ठीक है. इट इज यूज्ड इन अनदर प्रीवियस मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट वी यूज्ड. इसमें भी यूज हो सकती है. क्रॉस वैलिडेशन में आई डिवाइड माय डेटा into 70 and 30. 70 for training, 30 for testing. But ये चेंज होगा. जैसे फर्स्ट 70 मैंने ले ली,
नेक्स्ट आइट्रेशन में आई टेक नेक्स्ट 70 और जो बच गई उनको मैं रख लूंगी फॉर टेस्टिंग. तो यू शफल योर डेटा बेसिकली ताकि आपका मॉडल जनरलाइज हो. यहाँ तक समझ में आया? ऑल राइट. ठीक है, आई हैव टेकन 2000 इमेजेस फॉर टेस्टिंग. नाउ अब इमेजेस का साइज डिफर कर सकता है, राइट? रियल लाइफ सिनेरियो में कोई हो सकता है स्क्वायर इमेज जो 80 क्रॉस 1080 हो सकता है. इट इज रेक्टेंगल लाइक 1920 into 1080. तो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. तो we are creating a function to normalize the images. Normalize is basically standardize. तो मैं images को resize कर रही हूँ यहाँ पे 150 क्रॉस 150 में. इसमें images थोड़ी squish हो जाएंगी, but ये convolutional neural network है तो हम important features तो ले ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. Then you normalize the pixel values. 255 से divide कर रहे हैं. It is for simplifying your model only. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद you would map. यहाँ पे ट्रेनिंग का डेटा था, यहाँ पे वैलिडेशन का. तो जो बैच है उसमें देखो 18,000 इमेजेस हैं, उसमें 32 बैचेस आए हैं. उनको शफल करके मैं ट्रेनिंग करूंगी, जो मैं बोल रही थी वैलिडेशन टेक्निक. ठीक है. सिमिलरली इसमें भी आई विल मैप. आई एम नॉट शफलिंग दिस एज ऑफ नाउ. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट पूछ लेना, डोंट बी हेजिटेंट. यहाँ पे कुछ इमेजेस करप्टेड थी तो दे वर स्किप्ड. दिस प्रोसेस टुक लाइक 2 whole minutes. Next we are going to build our CNN with 3 layers to identify cat and dog. देखो 3 layers का मतलब है, let me find a better image. I think this should work. This is not clear but ठीक है. देखो input image थी यहाँ पे, then you did some pooling, convolution आपने करा, then you pulled it. अब इसमें ना एक और लेयर, ऐसे मान लो एम्प्लॉय कॉपी 3 बार कर रही हूँ मैं प्रोसेस 3 लेयर्स में. तो यही 3 लेयर्स हैं यहाँ पे. तो keras are used to make these layers. This is the syntax sequential layers dot conv 2d. 2d मैट्रिक्स है इसलिए 2d. ठीक है. एक्टिवेशन फंक्शन आई एम गोइंग टू यूज इज रेल्यू. जो इनपुट इमेज है उसका शेप इज 150 150. ये जो 3 है दिस एक्सप्लेन्स दैट दे आर इन RGB. नेक्स्ट इस लेयर में ही मैंने मैक्स पूलिंग कर ली. ठीक है, 2x2 के फिल्टर से. नेक्स्ट लेयर में इनपुट जाएगा. तो देखो इमेज का साइज इफ यू सी ये 32 से 64 हो रहा है. जो हमारी इमेज है ना वो स्क्विश हो रही है, वो ऐसे स्क्विश हो रही है. ठीक है. देन यू फ्लैटन योर इमेज. देन यू यूज डेंस न्यूरल नेटवर्क्स टू, ये जो फाइनल वाला है यहाँ पे पास करने के लिए. ठीक है. एंड यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज हुआ है वो है सिग्मॉइड. ठीक है. यहाँ पे ये इट विल क्लासिफाई इट एज कैट और डॉग. Now you finally compile your model. Loss is binary class entropy. Optimizer is added. Matrix is accuracy. Matrix is accuracy जो हम परसेंटेज में निकालेंगे कि कितना परसेंट एक्यूरेट है मेरा मॉडल या नहीं. ऑप्टिमाइजर लेट्स सी आई शो पिक्चर. देखो इट इज बेसिकली अ ग्राफ. इसमें आप क्या करते हो, देखो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये मेरे डेटा सेट के पॉइंट्स हैं. यहाँ पे दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? आई एम यस. समझा या? ठीक है. अब इस डेटा सेट में बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं बट आई ऑप्टिमाइज इट. आई ओनली टेक इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो एडम एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, वो हम यूज कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग इन डीप इनटू दैट. उसमें थोड़ी मैथ्स एग्जिस्ट करती है. guys might get a little thinking about it, but you can search for it. Then the loss I am going to use binary cross entropy. अभी ट्रेनिंग करने के बाद I'll show. I have trained this. ट्रेनिंग द मॉडल फॉर 5 epochs रह गया यहाँ पे. ठीक है. देखो आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल हिस्ट्री मॉडल डॉट फिट, जैसे आप लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे मॉडल डॉट
फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, सेम इसमें एक्स में आ गया आपका ट्रेनिंग, दिस इज नॉट एक्स वाई बट हाँ ट्रेनिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा में वी आर यूजिंग ये वाला वेरिएबल वैल डेटा. Epochs and batch size. Epochs is basically how many times you are passing your data through the model. एक बार नहीं train कर रही हूँ मैं, I am training it 5 times. अब training it 5 times only took me like 1.5 hours. 10 भी कर सकते हो, उससे आपकी हर step में accuracy increase हो जाएगी. ठीक है. सो सी यहाँ पर एक्यूरेसी फर्स्ट स्टेप में वॉज 56%. इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 56% में. वैलिडेशन डेटा की एक्यूरेसी वॉज हाई, means it is overfitting a little bit. Then validation loss, how much accuracy you lost while training this. ठीक है, it is that. If you look closely, her epoch में accuracy has increased, and finally I got the accuracy of 88%, 89% we can consider this, and my loss came down to such low value, and my validation accuracy is also good. मतलब दोनों मैच मतलब आस पास हैं. इफ यू सी हियर यहाँ पे 56% थी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी, यहाँ पे 72. देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बट वी हैव reduced this difference. If you increase the number of epochs, so let's say 10, this might become even better. ठीक है, यहाँ तक समझ में है? Yes. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट आर मॉडल. अब देखो टेस्ट करने के लिए आई हैव यूज CV2 एंड ये चीज देखो, इफ यू आर डूइंग इट लोकली यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस. आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक फंक्शन एक वेरिएबल बना लेना फाइल, एंड उसमें इमेज का पाथ आप दे सकते हो. बट गूगल कोलैब में इफ यू डू दिस फ्रॉम collab.import files, जब आप इसको रन करोगे यहाँ पे एक चूज फाइल्स का ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी मशीन से लोकली फाइल चूज कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे हमने इमेज को रीड करा, फिर देखो ये जो इमेज है BGR में थी, आई हैव कन्वर्टेड इनटू RGB. लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. ये थोड़ा देख के ही समझ में आएगा. देखो BGR इमेज में RGB इज जैसे आप दुनिया को देखते हो, दैट इज नॉर्मली जिसमें रेड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर, BGR में ब्लू बिकम्स द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर. तो देखो BGR इमेज को आई हैव कन्वर्टेड इनटू RGB, बस यही है इसमें. देन यू रीसाइज द इमेज, क्योंकि ये इमेज मैंने इनपुट डाली थी, ये स्क्वायर तो नहीं है ना, क्योंकि 150 × 150 इमेज वी आर टेकिंग. सो आई रीसाइज्ड इट. देन आई डिवाइडेड द वैल्यूज बाय 255 इन द इमेज. दिस इज डन टू अगेन रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी. ठीक है. देन आई एम रीशेपिंग इट यूजिंग numpy. अब अगर numpy में इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च फॉर दिस फंक्शन. जो डायमेंशंस होती है इमेजेस की, यू रीशेप देम ताकि आपके मॉडल में इनपुट अच्छे से हो जाए. ठीक है. देन यू प्रिडिक्ट. ये देखो मॉडल यहाँ पे था, यूजिंग दैट आई एम प्रिडिक्टिंग मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ये वाली इमेज. लेबल डॉग इफ प्रिडिक्शन इज ग्रेटर देन 0,0. जो वैल्यू आएगी 2D आई मीन 2x1 की मैट्रिक्स हमारे पास आएगी. इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 then it is a dog, otherwise it's a cat. Then I have used matplotlib to show the prediction. ठीक है. So this is the prediction. यहाँ पे you can see I uh, uploaded the image of this husky. ये देखो BGR में ये कन्वर्ट होके थोड़ा RGB से BGR में कन्वर्ट होके थोड़ा bluish tone आ गया. Image didn't look like this. So this is a dog. Then I again use this code only. Then I got the prediction as a cat. So this is how you do this. इसमें कोडिंग इज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्योंकि यू हैव टू यूज एंड बिल्ड दीज लेयर्स. ठीक है. तो आई विल शेयर दिस कोलैब नोटबुक विद यू. यू कैन एक्सप्लोर इट. इसमें ट्रेनिंग में टाइम लगता है, दैट्स व्हाई आई डिडंट रन दिस. इसको करने में बहुत टाइम लगा था. ठीक है. सो या दिस इज अबाउट इट. अब देखो आई हैव सेव द मॉडल डॉट सेव.
cat.classifier.h5. If you remember the previous session where you guys made the placement package predictor, वहाँ पे model का extension was .pkl or .sap. I remember it. Yeah. हाँ, तो टेंसरफ्लो में मॉडल्स या इमेजेस वाले मॉडल्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन .h5 फॉर्मेट. ठीक है, दिस मॉडल वाज लाइक 0.2 GB समथिंग. यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आई थिंक ये सेव हुआ था. अभी रन टाइम कनेक्टेड नहीं है इसलिए नहीं शो हो रहा. यहाँ पे इफ यू रन दिस सेल ना ये मॉडल यहाँ पे सेव हो जाएगा. यू कैन डाउनलोड दैट. जैसे आपने प्लेसमेंट पैकेज प्रेडिक्टर बनाया था आप स्ट्रीमलेट यूज करके ये भी बना सकते हो. स्ट्रीमलेट में ये बनाना भी इज वेरी सिंपल. ठीक है, सो आई डिडंट मेक दैट अभी बट या यू कैन मेक दैट. यहाँ तक सबको समझ में आया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? कोई डाउट? Yeah, all clear. Yeah, you can train it with T4. I did it with that only, but still it took some time. Okay, so this was about convolutional neural networks. Now should we move on to the quiz? और किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है? Quiz. क्विज चलो ठीक है क्विज. जस्ट अ सेकेंड. And the week 3 task, guys, you need to submit it before Monday. Monday, like Monday 10 a.m. tak you can submit it. I'll share my screen. Just a second. You can start joining. I'll drop the link in the chats. Don't share it in the group. कुछ लोग ग्रुप पे शेयर कर देते हैं. We'll start at 8:27. 2 minutes में आप लोग ज्वाइन कर लें. Guys, you have two bonus activities. The previous one for 50 points. This is for 25. Is starting.
I think everyone has done or कोई रह गया कोई? Done everyone? Yeah. Okay. So we have the top five people. We have Mukul, Bhavesh, Ananya, Adya, and SN. Congratulations, folks. Glad that some of you are always at the top. It's nice to see. Should I move on to discussing the questions? Yes. Okay. Okay. So the first question is, what is the role of pooling layer in CNN? To increase the number of parameters in the model, to reduce spatial dimensions and retain important features. So, agar you know the even the literal meaning of this word, then answer is to reduce spatial dimensions and retain important features. Alright, इसमें दो लोगों का गलत हुआ है. No issues. Which of the following is a common activation function used in CNN? The answer to this is ReLU. बाकी सब भी होते हैं. But most commonly we use rectified linear unit. Next question is, what is the primary function of filters or kernels in convolutional layer of a neural network? So what did you guys mark as the answer? To extract spatial features. Yes, to extract spatial features. Filter है उसका नाम. You are applying filter to get something out of it. ठीक है? Next question is, why does increasing depth of CNN uh, improve performance up to a certain point but then degraded? ये थोड़ा सा थिंकिंग वाला क्वेश्चन था. देखो, आप जितनी चाहे मर्जी लेयर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने न्यूरल नेटवर्क पे, इससे आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन. बट देखो, एक पॉइंट के बाद इफ यू इवन सी इन लीनियर रिग्रेशन, overfitting हो जाती है. Means your data, your model becomes too accustomed to the data it is being trained on. New data पे it wouldn't perform good, which is what overfitting. इसीलिए uh, हम लोग ज्यादा न्यूरल लेयर्स नहीं यूज करते हैं. ठीक है, मतलब कर सकते हो बट ओवरफिटिंग हो जाएगी. एक गुड अमाउंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क में आपको लेयर्स यूज करनी होती है. Next question is, what does the term stride refer to in CNN? It is the distance filter moves across the image in each step. I hope अभी questions में किसी को doubt नहीं होगा. Yes, clear. Okay. So I'm ending the quiz. Okay. And this was today's session. I think this is the last session. Week 3 is about to end. Yeah, sadly. Sadly. All right. So yeah, I hope कि सबको इस पूरे build with AI से कुछ सीखने को मिला, something valuable, something useful, because we put in a lot of effort into this. I will also float a feedback form after Build with AI ends, and I would love to see your feedback. And yeah, जो top 3 लोग होंगे, they would be eligible for swags. ठीक है? I hope सबको मजे आए होंगे Build with AI में. Can you guys just unmute yourself and say something? Yeah, we really appreciate your efforts. Your great efforts. Thank you, thank you. And you guys can connect among yourselves also. Group में there are many people into AI ML. You can connect with them on LinkedIn, DM them, make projects. ठीक है? Promote, study AI ML, and yeah.